Assalamu alaikum, everyone. My name is Haider Shishmahal, as you know. And with me, I'm very honored to have Dr. Mohammad Azim Rao, who is one of the most fantastic psychiatrists in the country, in Pakistan. And he has studied in Europe. He has an MBBS, so he's a medical doctor. He has a master's in public health, and he has studied and practiced in Spain and Italy. He's worked with the World Health Organization's Collaboration Center, and he has been working with the UN and left a very lucrative opportunities in Geneva to come back to Pakistan, where really his heart is, and to treat patients here and to increase mental health awareness. And that is part of his mission, which is why he has joined us today. And today we're going to be talking about the role of medications in managing mental illness and distress. So, Dr. Rao, is there anything that you would like to add to that before we begin? Thank you very much for the very generous introduction. The things are pretty similar the way you are trying to tell about the reasons I came back from Europe, and you are very right, and I will be honest in telling that the coming back to the country was that I should treat my people, having the skills which I have learned over there, I should apply with my own people in my country. MashaAllah. That's fantastic. So, Dr. Rao, let's dive in. This is an in-depth look at psychology. So, what we're doing is we're going past the basics, and we're looking really, in answering some definitive issues when it comes to psychology and psychiatry. So, as a start, could you please tell us कि the first thing is कि जब भी कोई problem होती है घर में, the main thing is that people first of all aren't very much aware कि what are the mental health issues, and usually the other people they ask, they are also have very little knowledge. And in Pakistan, there is a very big dearth of very trained and professional people in the mental health field. And there are a lot of other people, though, who are filling that gap. People such as life coaches, positivity coaches, there are counselors, there are NLP practitioners, hypnotherapists, psychotherapists, psychiatrists. So, first of all, could you tell us a little bit about, what are all these different professions? And, is there any advice that you could give on when to visit what kind of professional, or any kind of caution about visiting someone in a certain kind of situation? That's a great question indeed, because putting so many names in the name of help, I think we are confusing people more. Whereas we need to be more clear in terms of what kind of people needs to be available and who are the real professionals to talk about the mental health problems. Before I answer your very pertinent question, let me be a little brief about the awareness as you are asking. The more we delay in seeking mental health is like as if we are not sincere we are not honest with our own selves, which means that if I start having a tick 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 in the engine of my car, I will be the first person to go to the showroom on the same day, so that the problem may not become complicated and I may not burn out engine of my new car. So how come if I am so much concerned seeking help with the engine of my car on the same day, how is it possible that I am going to delay the engine of my body for days and days and months, unfortunately, not only in Pakistan but also abroad. This is the same, that seeking help to the right person takes weeks and weeks in all the mental illnesses which we talk about. So therefore it's a problem, and therefore I would only suggest and emphasize that please, when there is a tick 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 in your head, which means that you are not working optimally well, and that's the point when you need to seek help of a professional one. And the other is, as you are asking, so many names. Please let's not put so many names in the name of seeking mental health. A doctor is a doctor. It's very clear. And for example, a psychologist is a psychologist. And the basic difference which we only need to differentiate between the two is
psychiatrist is a medical professional. He's a medical doctor, and then he specializes further in psychiatry, fellowship training. Whereas a psychologist is not a medical doctor, and they are specialized in their own specialty, whereby they are trained with their psychotherapeutic work and other skills, and they treat the patients. And the domain of the the two professionals is very different, because a medical professional can play with the medical medication, because he is trained enough to talk what the medication is, when the medication is needed, how much and what medication is needed, what are the side effects, what are the toxic doses. So therefore, it's a very specialized and a different specialty as compared to psychology. Whereas since psychologists are not medical doctors, so therefore they are very honest in not suggesting the medication. So therefore, this is the clarity I want to make. And the other thing which you mentioned, for counselors, positivity coaches, kind of things, I may not be able to comment honestly about that, because let's be clear about what, for our listeners, for the viewers, that please seek help with the professionals, and I would expect that the psychiatrist can refer to a psychologist, and psychologist would refer to a psychiatrist if needed with the patients. For the patient's guidance, I can only say all problems in mental health, they do not need medication, first of Okay. all. And when they need medication, please do not delay that medication, because that medication is could be life saving for you. It's like we take Disprin for our headache, so is the antidepressant and antipsychotic medication for different psychiatric problems. And if I do not take Disprin for my headache, I will suffer the whole day long. I will spoil my meetings. I will spoil my patients because I have headache. So same is the case when I need medication. I must go for medication, and I expect my professional colleagues that they will be prescribing medication optimally by optimizing when it is needed and when it is not. Thank you so much, Dr. Rao. I just want to kind of sum up and try to recap so I think I understand what you're saying. So I think the first thing is that the biggest distinction that you've made is that there's a psychiatrist, and the psychiatrist is a medical professional, and psychiatrist is the only person who can prescribe you medications. So if you're going to anyone who is not a medical doctor and who is not a psychiatrist, and they refer to you to take some medication, you should absolutely not take that medication, and you should check with a psychiatrist or a medical doctor first, right? Absolutely that right. is that is one of the things, because I have seen and I have heard that there are people who are not medical doctors who are prescribing medications because they think they have that kind of experience. But actually, to be a medical doctor, first 5 years of medical school, then 4 years in psychiatric residency and training, then masters in, so I mean, Hote Guate, you studied about 10 years in this to have the privilege of prescribing the medication. So it is not a privilege that anybody should just take because they have a few years of some experience, even knowing, because they do not know the full picture and they do not have the full training that the medical doctor and the psychiatrist does. Yes. Yeah, absolutely. Haider Sahab, I would add one sentence to that. See, the human body is the most complex thing in the Almighty has created. So how come somebody who is not trained for 10 to 14 good years in human body and human mind, and he or she is prescribing medication about the most complicated creation of Almighty? How what he or she is gonna make with the most complex thing when he or she is not trained enough? And therefore, as you said, that I got this privilege of writing the medication by this extensive training of staying in the field for like 14 years of my life. So therefore, if anybody else who is not trained enough, I would say that he or she needs to consider about the integrity of his own self if he or she is still writing the medication. So therefore, and they see then there are a lot of chances to what will happen if somebody else is writing. So
what will happen if I start making an aeroplane? I will be a disaster. So same is the case if the best aeronautical engineer will be writing medication, he is the biggest disaster, though he is very competent in his aeronautics. So it is easy to understand, I would say. Yeah, so it is not to do with anything that the other person is not intelligent or they don't have the lived experience, but this is a privilege that comes after a training and many years of study. But Dr. Saab, that being said, you also said that not all problems need medication, right? So this is leading to the second question, but I just want to say that therefore, since not all problems need medication, not all problems are created equal. So the different sorts of types of mental health practitioners that we mentioned earlier. So if our problems are not such that perhaps we don't need medication, and whether we go to a psychotherapist or psychologist or any other kind of coach, whoever can help us, and that is a bit of a trial and error. So for different problems there might be different types of people who might be able to help us, but when it comes to medication, only the psychiatrist or the medical doctor. Yes, Next, yes, yeah. that's right. That's right. Mhm. So next question, sir, is leading into this. So what are the types of problems? So the thing is, अब ये तो बात समझ में आ गई, but लोगों को फिर ये question है कि what are the types of problem that needs medication and how can medication help? So when is it that you think that a situation is serious enough to want medication and how the medication can help? It does not depend on the severity कि कितनी complicated मसला हो गया है. For clarity in the question, I would say कि जैसे सब लोग अपने different problems के लिए डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं ना, किसी को पेट में दर्द है तो डॉक्टर के पास जाएगा, किसी को अपना खुदा ना खास्ता हड्डी टूट गई है तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाएगा. तो इसीलिए अगर लोगों को लगता है कि they are caught in their life, they are not working really well, they are caught up with the family issues, they are caught up with different, they are not as good as they used to be, one, and the other is the psychiatric issues have unfortunately risen to the point where depression now is the second largest disorder in the world, and same is in Pakistan, unfortunately. So therefore, so the gravity of the problems has risen too much, keeping in view the different problems in our social environment, psychosocial issues, endogenous problems. So people should not be confused. They should be clear that they need to go to a psychiatrist. And now it is his job to understand and see if the medication is needed or not. And people should be very open as in seeking medication. जैसे हम दर्द की दवाई लेते हैं, जैसे हम सर दर्द की दवाई लेते हैं, जैसे हार्ट में अगर गॉड फॉरबिड हमें मसला होता है तो हम दवाई लेते हैं. तो सेम इज द केस कि जब डिप्रेशन होगा या कोई ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया या एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, and psychiatrist writes medication, people should be openly, they should be welcoming to in seeking medication. They should not be hesitant. Okay, because I can add one more sentence to that. इन दवाइयों को अगर जैसे हमने बात की है कि कितना एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस होता है एक प्रोफेशनल का, तो व्हेन ही इज प्रेस्क्राइबिंग मेडिकेशन ही एग्जैक्टली नोज कि इस दवाई का क्या क्या साइड इफेक्ट है, क्या इस दवाई में कोई गॉड फॉरबिड एडिक्शन पोटेंशियल है क्या नहीं है. तो इसलिए इन लोगों को इस बात से कंफ्यूज और डरना बिल्कुल नहीं चाहिए कि हम डिपेंडेंट हो जाएंगे. नो, ऐसा ये बहुत मिथ है सोसाइटी में. आप देखें कि ये मिथ हाइपरटेंशन या डायबिटीज के मरीज जो सारी जिंदगी दवाई लेते हैं और पहले एनकाउंटर पे ही डॉक्टर बता देते हैं कि आपको ये दवाई सारी जिंदगी लेनी पड़ेगी, जबकि मैं एज अ साइकाइट्रिस्ट आपको ये बता सकता हूँ कि एक या दो डिसऑर्डर के अलावा बहुत ही कम ऐसे होता है जिसमें मैं मरीज के साथ ये कमिट करूँ कि आपको सारी जिंदगी दवाई लेनी पड़ेगी. आई ऑलवेज से कि आपको एक साल के लिए 6 से 9 महीने के लिए दवाई लेनी होगी और उसके बाद आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं ड्रग फ्री कर दूं. और हाँ, उसके बाद डिपेंड ये करता है कि कितना अच्छा मरीज की क्या चॉइस है और क्या हमें दवाई के साथ जाना चाहिए या नहीं. सो इसलिए बहुत ऑप्टिमल यूज होता है मेडिकेशन का. डिपेंड सिर्फ क्वेश्चन ये है हमारी फील्ड में जिसको मैं चैलेंज भी समझता हूँ कि अब डॉक्टर्स कितने प्रोफेशनली उसको प्रोफेशनल एक्यूमेन के साथ उसको देखते हैं, कितना उसके साथ लेजिटिमाइज करते हैं अपनी मेडिकेशन को. थैंक यू डॉक्टर. तो फर्स्ट एक बात ये हुई कि आपकी कि one should first always see a psychiatrist if they have a worry that it is
a kind of a mental health issue. And then if the psychiatrist prescribes counseling or exercise or diet or medication, then you can move forward based on that, and look for how, if you exercise, maybe you need to join a gym or whatever you need to start. So the first thing is, do always see a psychiatrist. With There should be no harm, because a psychiatrist is not just there to prescribe medication for life. So people do have this fear कि हम जाएंगे तो बस हमें पिंजरे में बंद कर देंगे, पागल खाने में बंद कर देंगे पूरी जिंदगी, ये डॉक्टर का काम ही यही है, the whole life is going to give me medication. But it's a complete myth. It's complete wrong, because other than one or two disorders, as you said, like you gave the example of depression, a lot of times depression can be cured in 3 months or 6 months or 9 months with medication. And if the doctor knows that it's serious issue, perhaps that requires lifelong medication, they say it up front. So, this is very thing that a person should see a doctor right away. They should get the opinion. They should get, find out what the person's saying, because psychiatrist's job is not to put somebody on medication for life. Usse aapko kya milega? What are you going to get out of it? Nothing. Absolutely, and adding to that, Heather, a very interesting fact. And since I have done this research on my own patients, let me share the data of 1,500 patients who are seeing me in clinics. उन तमाम 1500 मरीजों में एक दवाई थी या दो दवाई थी प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर, इमेजिन। और वो भी 6 महीने या 9 महीने से ज्यादा नहीं, और उसमें एक या दो दवाइयां थी। अब आई कैन चैलेंज कि जितना भी आप पूरे टाउन में आप चले जाएं किसी भी डॉक्टर के पास जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, या आप समझें ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, या मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, आई वुड से बहुत हेजिटेंट हूँगा मैं ये एक्सेप्ट करने में कि कोई एक दवाई लिखता है। लोग 3 दवाई 4 दवाइयां भी लिखते हैं डॉक्टर्स, जनरली जरूरत होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इलेजिटिमेट लिखते हैं। I believe in the professional acumen of the doctors mostly, लेकिन उनकी दवाई, जबकि साइकाइट्रिस्ट, आई एम टेलिंग यू माय ओन एक्सपीरियंस कि 1500 के प्रेस्क्रिप्शंस पे मैक्सिमम 80% पे एक दवाई और 20% पे दो दवाइयां थी मेरे अपने प्रेस्क्रिप्शंस पे। तो दिस वाज अ वेरी interesting thing which I saw in the prescriptions which we did the audit of our patients last year. Fantastic, amazing. So on average, out of 1,500 patients, most patients were on medications on average for around 6 months and only had one or two medications on average. Yes. अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हमारे माशरे में बहुत ये भी होता है कि लोग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं. they want to, they think कि होम्योपैथिक या ये स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट्स, and they feel that they're as effective in managing symptoms of mental distress. So what is your opinion on the alternatives? And I'm going to club this with the next question ताकि एक ही ये discussion हो जाए. And what is the evidence-based treatment? So what is meant by this evidence-based treatment, and what about the alternatives to Western medication like homeopathy or spiritual treatments? इसके बारे में कुछ अगर आप समझा सकते हैं या बता सकते हैं. जी श्योर. इनफैक्ट देखें, डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट सिटीज हैं, फिर डिफरेंट विलेजेस हैं. आप सोचें कि सिर्फ साइकाइट्री के मरीज या हमारे जो डॉक्टर्स हैं सिर्फ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर या कराची में तो नहीं है ना. हमारा तो पूरा कंट्री है, उसमें विलेजेस हैं, वहाँ पे लोगों के डिफरेंट बिलीफ मॉडल्स हैं अबाउट देयर सीकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्प, और उनको ऑल द वे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि आपका ये बिलीफ मॉडल क्यों है कि वो मरीज कहता है कि मैं तो जी पीर साहब के दम दरूद से ही ठीक होता हूँ, या वो मरीज ये कहता है कि जी हम तो डॉक्टर साहब आपकी दवाइयों से तो हमें आदत पड़ जाएगी, हम तो होम्योपैथिक की लेंगे दवाई जिसका हमें फायदा होगा. मैं वो मरीज मेरे पास भी आते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बहुत अनफॉर्चुनेटली जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मसला फिर आते हैं. तो मैं ये समझता हूँ कि आई रेस्पेक्ट उनकी ओपिनियन, वी रेस्पेक्ट दैट कि वट एवर योर बिलीफ मॉडल इज, इफ यू आर रियली गेटिंग हेल्प प्लीज डू दैट. बट आई वुड से कि जब आपको हेल्प ना मिल रही हो तो स्ट्रेट अवे गो टू द मेडिकल प्रोफेशनल. वो मैं इसलिए कहता हूँ कि जो आपका सेकंड क्वेश्चन भी है कि एविडेंस बेस्ड मेडिकेशन, देखें जो
वेस्टर्न नॉलेज या वेस्टर्न ट्रेंड लोग ज्यादा, और वही नॉलेज हमारे पास सारे ट्रिकल डाउन हो रही है, विच आई से इज अ बिग बिग ब्लेसिंग लोगों के लिए, कि दवाई हमें मिलती है, हम मरीजों को देते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक ही दवाई देते हैं, मरीज ठीक हो जाते हैं। कोई सीईओ है किसी कंपनी का, कोई कोई people are working at very legitimate and very prestigious positions, and they stay very very good because they are only taking one medication of mine, and they are really happy कि हम अपने इतने बड़े बड़े बिलियन के बिजनेस चला रहे हैं डॉक्टर साहब, आपकी एक दवाई के साथ हम स्टेबल हैं माशाल्लाह से। तो आई फील वेरी हैप्पी अबाउट दैट। लेकिन क्या एक वो वही साहब जो सीईओ कंपनी के हैं, वो किसी दम दरूद करा के अगर वो ठीक रहते हैं, तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि चलो दम दरूद करा के वो अपना कंपनी चला रहे हैं। अगर वो चला सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये बहुत डिसऑनेस्टी होगी कि वो ठीक नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी वो किसी होम्योपैथ के पास जाते हैं या किसी हकीम साहब के पास जाते हैं। उनमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है, जो मैं आपके साथ और अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूंगा, कि देखिए उस पर रिसर्च अगर हो रही हो, तो अल्लाह ताला ने तो बहुत नए इल्म रखे हैं, उनके अंदर बहुत कैपेसिटी भी हो सकती है हमारे फील्ड से आगे ज्यादा बढ़ने की। लेकिन क्या उस पर रिसर्च हो रही है, क्या उस पर एविडेंस मौजूद है, जो आप कह रहे हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन? क्या मैंने जैसे 1500 मरीजों का डेटा आपके साथ शेयर किया ना, जिसको मैंने पेपर फॉर्म में कन्वर्ट करके पब्लिश किया है, कि देखें दिस इज हाउ psychiatrists are prescribing only one medication is so helpful with the patients। अगर इसी तरह का नॉलेज या रिसर्च आए मरीजों की, हकीम भी शेयर करें, होम्योपैथ भी शेयर करें, और फिर वो दे शुड बी वेरी क्लियर कि उन दवाइयों के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या उनके नुकसान और फायदे हैं, और उसकी एविडेंस हमारे पास हो, तो फिर सेफली वो कह सकते हैं ना, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। अदरवाइज शायद हमारी उन विलेज की पॉपुलेशन को मैं ये कहूंगा फिर भी कि वो एक्सप्लॉइट शायद हो रहे होंगे, कि क्योंकि उनके पास चॉइस एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की नहीं थी उस विलेज में, क्योंकि मुल्क के अंदर 342 साइकाइट्रिस्ट हैं इस वक्त पूरे मुल्क में, जबकि हमारी पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए हमें 9000 साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है अपने मुल्क में। तो मैं ये समझता हूँ कि साइकाइट्रिस्ट के कंधों पे बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमने अपने आउटरीच विलेजेस तक कैसे अप्रोच करके लोगों को फायदा पहुंचाना है, जबकि वो बहुत बेचारे खराब हो रहे हैं लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो पहुंच नहीं पाते साइकाइट्रिस्ट के पास। और वो बहुत ब्राइट बच्चे, आई वुड से कि आइंस्टाइन और न्यूटन हैं उन एरियाज में हमारे, जिनको अगर हमने अपने हाथों से ट्रीट नहीं किया तो वो शायद ज़ाया हो जाएंगे। सो इसलिए मेरा ये फोकस और मेरा दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, कि उन लोगों को कैसे ट्रीट और अप्रोच किया जाए जो सिर्फ इसलिए नहीं आ सके उनके पास नॉलेज नहीं था। Thank you. So I'm going to sum this up, and we're also going to move to a question after that. So I think the main thing that you have said, Dr. Rao, is that first of all, if it works, it works. But if it doesn't work when it comes to alternative treatment, then the person should not hesitate in seeking a professional's help, because majority of the time the professional is only going to prescribe them one medication, and most likely it will not be for the rest of their life. The other thing is that you would welcome more research or more evidence, more papers to be published on the findings of homeopathic practitioners or spiritual practitioners, because people's belief systems are there, and belief is a big part of being well and feeling well. So you would welcome that. If there was more research on that, you would be very happy, and you would also welcome there being a lot more outreach in the villages, because the number of psychiatrists is very low. So you need somehow to one of the things that you are interested in is prescribing, helping more people in the outlying areas. So on that note, because one thing I remember, I read a paper which was on maternal depression, because depression, as you said, was one of the most common illnesses, and this maternal depression of expecting mothers, or after they give birth. So I think postpartum, as they call it, this is very common. So psychiatrists like yourself have trained a lot of primary health workers, primary doctors, primary clinicians who go to the villages with a little bit of the counseling and psychotherapy techniques and things like that. Now, that was just a comment from me, but this leads to Mr. Ali Balagamwala's question, who says, and I quote, "This is very interesting. From what I understand from Dr. Rao's statement is that max 9 month to 1 year medications should be stopped for the majority of the patients.
And then he says that I personally know people who have been on meds for depression for years. How does one move off these meds and break the dependence? So, Dr. Rao, is there any sort of wisdom you can offer on people who are taking long-term treatment for depression? जी श्योर देखें बिल्कुल इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन थैंक यू फॉर आस्किंग दैट जो जो प्रोटोकॉल डिप्रेशन को ट्रीट करने का है जैसे कि बहुत कॉमन है वो 6 मंथ्स का ही है मरीज और every psychiatrist aims to treat his patient for 6 to 9 months and then stop the medication. But many times it happens, not in all, many times it happens that patient is not working well. When we stop him on medication, he is not working well. And then possibly we need to know and we need to understand that since the we stop the medication and patient is not working well now, he is not fine, he is not optimizing his performance. So what is the problem? फिर होता यह है कि डिपेंडिंग ऑन द सोशल सर्कमस्टेंसेस, डिपेंडिंग ऑन द जॉब प्रॉब्लम्स, मैरिटल प्रॉब्लम्स, फैमिली इश्यूज और सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली हिस्ट्री, जिन लोगों के अंदर फैमिली हिस्ट्री आ रही हो डिप्रेशन की, फॉर एग्जांपल मदर और फादर में थी या बहन भाइयों में मौजूद थी, तो उन मरीजों में ऐसा होता है जनरली कि उन लोगों को हमें दवाई ज्यादा अरसे तक देनी पड़ती है। जो फिर उसमें जो मैंने कहा ना कि 6 से 9 महीने में वो लोग हम दवाई जब बंद करते हैं तो मरीज बेहतर नहीं होता और पेशेंट इज सेइंग कि डॉक्टर साहब प्लीज ट्रीट मी, आई एम नॉट वेल, और उन मरीजों में हमें कुछ ज्यादा अरसे के लिए दवाइयां देनी पड़ती हैं। ये डिपेंडेंस हम इसको नहीं कहेंगे, हम इसको ये कहेंगे कि जरूरत है। जैसे डायबिटीज ठीक नहीं हो रही और हमें दवाई देनी ही पड़ रही है, ये डिपेंडेंस नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मॉर्बिडिटी जो इलनेस की है वो इस कदर ज्यादा है कि हम उससे छुटकारा नहीं पा रहे, उस इलाज कर नहीं पा रहे हैं। जैसे बहुत सारी इलनेसेस, जैसे गॉड फॉरबिड किसी को ट्यूमर, तो खैर ज्यादा बड़ा लफ्ज हो जाएगा, जैसे कैंसर है, उसका कोई इलाज नहीं है। हम ये नहीं कहते कि साइकाइट्री में इलाज नहीं, इलाज फिर भी मौजूद है, लेकिन फिर हमें दूसरी टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं, जैसा कि ज्यादा अरसे तक ट्रीट करना या फिर मुख्तलिफ मेडिकेशन के कॉम्बिनेशन के साथ ट्रीट करना। Interesting. Okay. So basically, I think that's absolutely right that हर किसी की morbidity जो है ना अलग होती है. So I think that's a fantastic answer. Sir, let's move on to the next question. And this one revolves around stigma. And this, again, I'm going to look at your personal observation. As you say, you've been here and you've treated 1,500 patients. You wrote a paper. Have you felt, because that any stigma around using medications for mental illness, has it declined in our society? Or as per your observation, the stigma is as much as it was perhaps 10 years ago? 10 years का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो एब्सोल्युटली बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन स्टिग्मा अभी भी मौजूद है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में है हैदर। ये जो स्टिग्मा मेंटल इलनेस का है, ये पूरी दुनिया में मौजूद है। आई वर्क इन स्पेन एंड इटली, आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द ग्लोब एंड आई हैव सीन पीपल अनफॉर्चुनेटली who are very well educated in United States even. They have stigma. They feel hesitant to go to a psychiatrist and seeking help for their mental illness. और जैसा कि मैंने ये कहा कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट इसलिए है कि सबसे ज्यादा नुकसान तो सिर्फ उसी इंसान का हो रहा होता है जिसकी गाड़ी खराब हुई है ना, जिसकी गाड़ी में टिक टिक हो रही थी, उसने नई गाड़ी खरीदी थी और वो इंजन सीज हो गया, तो सबसे ज्यादा नुकसान कोई और सोसाइटी में कहेगा नहीं नहीं ये तो नई गाड़ी है, आप इलाज ना कर, इसको ना दिखाएं शोरूम पे, ये नई गाड़ी है। वो लोग तो कह के आपको साइड पे हो जाएंगे, लेकिन नुकसान सिर्फ आपका होगा। ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल के पास जाने का यही बात होगी ना कि वो कहेंगे कि नहीं इस गाड़ी को इंजन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यू कैन ड्राइव वेरी इजीली, लेकिन आप एंड देन यू कैन ड्राइव विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि कोई मसला नहीं है। गॉड फॉरबिड मसला उस सूरत में हो जाएगा जब सीज हो जाएगा इंजन। सो देयरफॉर जब मेंटल इलनेसेस की जब बात आती है, तो जब लोग स्टिग्मेटाइज करके इसको नहीं वो सीख कर रहे हेल्प, तो अनफॉर्चुनेटली देखें सबसे ज्यादा नुकसान उस बंदे का होगा जिसने हेल्प नहीं ली, उस फैमिली का होगा जिस फैमिली के अंदर वो बंदा मौजूद है। और हो सकता है कि वो बंदा बहुत एक काबिल, आई वुड से अगेन कि बहुत मैंने ऐसे इंटेलिजेंट और बहुत काबिल लोग देखे हैं जिनको सिर्फ हम ट्रीट करते हैं तो वो बहुत एक ऑप्टिमाइज
अपनी परफॉर्मेंस की वजह से पूरी कंट्री और सोसाइटी के लिए बहुत हेल्पफुल लोग होते हैं, और जिनको अगर हम ट्रीट ना करें तो एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है उस घर का, उस शख्स का और उस कंट्री का भी, आई वुड से ऑन द लार्जर स्केल, जिन्होंने हेल्प नहीं ली होती। तो इसलिए आई कैन ओनली कन्विंस एंड से कि प्लीज हेल्प लें इन द फर्स्ट प्लेस। और फिर दूसरा जो एक एडिंग टू द सेम क्वेश्चन जो आपने कहा कि स्टिग्मा की वजह से लोग हेल्प नहीं ले रहे होते, तो उसमें सबसे बेस्ट उसमें हैदर जो एक बहुत मेरे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है वो ये कि पेशेंट खुद बहुत बड़ा एडवोकेट बन जाता है मेंटल हेल्थ का, जो ठीक होता है ना, वो अपने से यानी पूरे ऑफिस में पूरे अपने कोलीग्स को कहता है, वो प्लीज सीक हेल्प, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ इन योर लाइफ। सो वो बहुत हेल्प होती है कि वो लोग खुद जाते हैं। और फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे प्रोफेशनल कोलीग जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और दूसरे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं, वो हमारी बहुत हेल्प कर सकते हैं। जैसे आप जैसे एजुकेटेड लोग जो सोसाइटी में काम कर रहे हैं, फिर स्टूडेंट से बहुत मिलते हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, स्टूडेंट्स को बहुत गाइड कर सकते हैं, तो ये बहुत हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं अपनी सोसाइटी में एक हेल्दी सोसाइटी रखने के लिए। Thank you, doctor. I want to sum up and I want to add some observation of my own. So आपकी ये observation है कि 10 years में yes काफी हमने ground break किया है पाकिस्तान में, and there is a lot less stigma than there was 10 years ago, but still stigma is a big issue and it prevents people from seeking treatment. And when people don't seek treatment because of that stigma, there's a great loss to the individual, to the family, and to the society, because that person who could contribute so much to all of these different aspects of life instead might become a burden because of the resistance or stigma to treatment due to which they don't take the treatment. So a person who can, and then the other thing that you said was that one of the positive, like you can say, rolling boulders or snowballs is that for every person who is successfully treated, they become advocates and they spread in their offices and in their families, in their communities, that how treatment helped them. So for every successfully treated person, inshallah, mashallah, there will be many more people who will be willing to try treatment. And of course, this is a joint effort because, as you said, psychiatrists are very few. So it is a job people in the wider mental health field, whether they are counselors or therapists, and the teachers and the other doctors and medical professionals and the nurses. So everybody has to help bring the awareness about the mental health and the stigma. I had one comment that I had thought about, then I forgot, and then from your talking, mashallah, say I remembered, and I really wanted to share with the people listening. And I think this is a maybe philosophical on why people feel that they're so resistant to mental health treatment and they put so much stigma. And I think it is because people have this idea that their identity and that their personality revolves around their brain. So they think that who they are is actually up here. This is who I am. I'm this. And because of that, when you say there's something wrong here, they say, no, there's nothing wrong with me, because it feels like it's questioning their whole personality or that their whole identity revolves around their brain or their idea of themselves. But my observation is this, which is that if somebody's parent or grandparent gets Alzheimer's, do they stop becoming a parent or grandparent? Somebody who gets an accident, gets paralyzed or some kind of brain trauma, do they stop being who they are? No, right? So the main thing is that we really need to rethink, just like we don't think that we don't think that I'm my hand or I'm, this elbow is Haider Ali Shishmahal is his elbow. So similarly, we should not think that we are just, this is everything about us. There's so much about us that what other people say we are or think that we are, and perhaps what I think I am is different from someone else. So we should think about it philosophically, that why we are so resistant to treatment, because this is just another organ, just like our heart and our kidney and our liver and our hand. It's just another body part, tissue, and that's it, isn't it? Yeah, very important again. Or rather, I would say and add, that the most important vital organ is our brain, because it is the engine of the train. And if the engine of the train is weak, how can it, push the whole or pull the whole big train, which is carrying 1,000 passengers?
So therefore, the engine actually needs to be very healthy, very strong, strong in a sense that healthy. And healthy does not need any explanation. It means that it is working really well to the point where it should work. और पहली निशानी गॉड फॉरबिड अनफॉर्चुनेटली ये होती है कि पेरेंट्स और फैमिलीज आके यही बताती हैं कि डॉक्टर साहब ये बहुत ब्राइट थे, अब ये उस तरह से नहीं है। ये बहुत अच्छे टीचर थे, ये बहुत अच्छे मैनेजर थे अपने बैंक में, लेकिन अब उस तरह से नहीं है। दैट इज द पॉइंट व्हेन वी नीड टू सीक एंड गिव हेल्प, और बड़ा अच्छा हो जाता है। जो आपने पर्सनैलिटी से मुतल्लिक कहा ना, let me allow to add a few sentences to that. जी, जी सर। personalities, yeah, they are very much relevant to our brain. लेकिन पर्सनैलिटी एक का जो एक फॉर्मेशन होती है वो 22 years ऑफ आवर लाइफ, जो पहले 22 साल जिंदगी के होते हैं, तकरीबन 22 से 23 साल, उस दौरान में हमारी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग और मेकिंग हो रही होती है। तो अक्सर लोग ये सोच रहे होते हैं कि ये तो सिंस, जैसे आपने कहा ना कि ये तो it was your problem in your head and this is how my brain is, so I cannot be somebody else, this is how I am. Yeah, you are very right, you are you and I am myself. लेकिन पर्सनालिटी के अंदर जो हमारे ट्रेड्स हमने 22 साल में अपनी ग्रूमिंग में अपनी फैमिलीज के बैकग्राउंड के साथ और अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ लर्न कर लिया होता है पर्सनालिटी के अंदर, उसको हम बहुत हद तक अपनी कमजोरियों और स्ट्रेंथ्स के को चेंज कर सकते हैं विद द गुड जी। ट्रेनिंग एंड विद द हेल्प ऑफ आवर प्रोफेशनल। कि अगर मेरी, फॉर एग्जांपल, जैसे आपने ये भी बहुत कॉमनली सुना होगा कि गुस्सा मोरूसी होता है, लो जी मेरे बाप दादा में गुस्सा था तो मेरे अंदर भी गुस्सा है। इट इज अ मिथ, हम्म। इट्स अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन। इन चीजों को, इन हैबिट्स को बहुत हद तक पर्सनैलिटीज पे काम करके इनको बेहतर किया जा सकता है। हाँ, कुछ ट्रेड्स को नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारी ट्रेड्स को हम विद द गुड वर्क, साइकोलॉजिकल वर्क, वी कैन डू, वी कैन वर्क ऑन इट, एंड बाकी लोगों को बहुत फायदा होता है। Just to sum up, basically, while in the first 22 years, much of what who we are, our personality becomes crystallized, but with lots of hard work and training, it is possible to bring changes and incremental changes through the help of professionals. So, आपने last बहुत देखा question. होगा इसमें, लेट मी ऐड वन मोर सेंटेंस, कि जी जी। आपने देखा होगा कि आप जब अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत सारों को कुछ सालों के बाद मिलते हैं, तो आप कहते हैं कि यार, इज ही द सेम पर्सन, ही इज सो ग्रोन्ड, ही इज सो चेंज, ही इज नॉट द सेम पर्सन। या आप जनरली यही बात अपने उन कोलीग्स के लिए जरूर करते हैं जो खासकर बाहर से पढ़ के आए होते हैं। अच्छा, वहाँ क्या हो जाता है उन लोगों को, बेसिकली वो अपनी हैबिट्स को जब देखते हैं और वहाँ एक नई सोसाइटी में वो जब कंपेयर करना शुरू होते हैं, तो दे स्टार्ट वर्किंग ऑन देमसेल्व्स कि ओ माय गॉड, दिस इज द पॉइंट वेयर आई नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज द पॉइंट वेयर आई नीड टू पॉलिश माई सेल्फ। और वो जब इवेंचुअली 2 साल के बाद आपके पास आके मिलते हैं, तो आप काफी उनको डिफरेंट पाते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि वो अपने पर्सनैलिटी के काफी कंपोनेंट्स पे नोइंगली और अननोइंगली काम कर चुके होते हैं। Yeah, fantastic. I think it's so true. Okay, with time and effort, a lot of changes, and it's never too late to bring positive improvements in your behaviors, in your habits. One shouldn't say कि भाई मेरे दादा ऐसे थे तो मैं भी ऐसा ही हूँ. My parents were always been angry, so I'm also an angry person. Genetics are there, but we have a lot of control over ourselves. We need to own ourselves. Sir, last question. I know we're almost out of time. We're really pushing the clock. And this may be anecdotal. ये मेरी personal observation है. और मैंने ये notice किया because I've worked with a lot of people who've had these types of issues. And मैंने ये notice किया कि पाकिस्तानी doctors जो है ये antidepressants and antipsychotics काफी आसानी से prescribe कर लेते हैं. और एक्चुअली ये मेडिकेशंस आप फार्मेसीज पे भी वो बहुत इजीली दे देते हैं, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन हो या ना हो. जनरली एंटी डिप्रेसेंट्स एंड एंटी साइकोटिक्स are easy to obtain and get a prescription for in either case. However, I have noticed that both in medical professionals, the doctors, the pharmacists, they're very reluctant to prescribe medications for drug addictions. Uh, Medications like naltrexone or Subutex, which are used for opioid use disorder or alcohol use disorder. Another thing I've never heard of is a methadone clinic in Pakistan, which is one of the very common sort of treatments that you hear of in America for opioid use. So could you tell us, first of all, a little bit about what are these types of drugs? Because for a lot of the listeners,
this might be the first time they're hearing. So what is an agonist and an antagonist drug for addiction disorders? And any reasons that come to mind why doctors prescribe caution before prescribing these types of medications? जी ये यही बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है हैदर, क्योंकि देखें एंटी साइकोटिक्स और एंटी डिप्रेसेंट्स एक तो तमाम जब तक आप ट्रेन ना हो, इवन जो मेरे कोलीग जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, they need to be very well versed if they are prescribing any of the group of these drugs, Okay. so that the patient may not develop some side effects or it may not become harmful for them. So therefore we need to be very expert on what we are prescribing. Adding to what you are saying again कि naltrexone या Subutex और बहुत सारा जो आपने बातें की हैं एगोनिस्ट और Agonist एंटागोनिस्ट की, हाँ जी, वो देखें दैट इज अगेन अ सुपर स्पेशलाइज्ड मेडिकेशन, और उसके लिए इवन हमारी साइकाइट्री में भी एक फोरेंसिक साइकाइट्री और आई वुड से एडिक्शन साइकाइट्री एक एक सुपर स्पेशलाइजेशन इसमें होती है, जो उसमें वो लोग उस पर बहुत वेल वर्स्ड होते हैं उन दवाइयों को प्रिस्क्राइब करने में. वी ऑल्सो नो अबाउट दैट, वी ऑल्सो प्रिस्क्राइब, बट मैंने जैसे कहा कि एक ही सुपर स्पेशलाइजेशन है इसमें एडिक्शन नॉलोजी के अंदर, पर एडिक्शन स्पेशलाइजेशन साइकाइट्री के अंदर, तो वो लोग उसको प्रिस्क्राइब करते हैं. इसलिए तमाम साइकाइट्रिस्ट या तमाम मेडिकल डॉक्टर्स जो आप कह रहे हैं वो नहीं प्रेस्क्राइब कर रहे होते. और दूसरा सबसे बड़ा मसला इनकी अवेलेबिलिटी का भी है. कंट्री में ये दवाइयाँ बहुत फ्रीली अवेलेबल भी नहीं है, और इवन इफ आई प्रेस्क्राइब यू विल नॉट गेट इट ऑन द मेडिकल स्टोर. तो इसलिए ये भी लिमिटेशन है हमारे यहाँ, और उसके डिफरेंट रीजंस हैं, क्योंकि इनमें एडिक्शन पोटेंशियल है, इनको कुछ और इनमें इलीगल मैटर्स हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी है, और उन पे हम काफी स्लो हैं एज अ स्टेट, तो इस वजह से ये नहीं प्रेस्क्राइब की जाती. थैंक यू डॉक्टर. आई मीन यू रियली आंसर्ड द क्वेश्चन. एक तो बात आपकी सबसे पहले ये थी कि ये एक बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है इवन विद इन साइकाट्री विच इज एडिक्शन साइकाट्री, एंड इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज एज यू सेड इसकी एडिक्शन पोटेंशियल होती है, इसकी साइड इफेक्ट्स होती हैं. सो नॉट इवन एवरी डॉक्टर्स वुड बी कंफर्टेबल बिकॉज दे if they have not had that specialization, they say they would prefer you go to somebody who does have the specialization of addiction psychiatry. दूसरी आपने बात की कि ये कंट्री में ये खासतौर पे ये अवेलेबल ही इतनी ज्यादा नहीं है. That's another reason why doctors will not prescribe, because they know कि अगर मैं prescribe भी करूँ पेशेंट को frustrate करने की बात है, because this medication is not easily available. So the doctor has to have that specialization and then has to know where to get that medication. So there are very, very few places, but it's kind of a shame because in Pakistan, because of, in our northern side and in our western side, there is a lot of the opium. There's a lot of, I think, over 2 million addicts when it comes to opium and hash. So inshallah, I hope that there's something more that can be done there. But that was just a personal thing. Is there any other questions now from the audience? Dr. Rao, I'm going to read some of the comments. Halima Ishtaq has said, great session. Thank you, Halima. Mr. Ali Balagamwala has also appreciated you, Dr. Rao, and he said, thank you. Sadia has said, well said about stigma. We should normalize mental health help. Usman Mahmood has found it to be a very informative session with a positive thumbs up. Adil Ali, who's another practicing psychologist, has said that psychotropic medications treatment is commonly stigmatized and some of the side effects are overgeneralized. Okay, so Dr. Saab, do you think that Adil is correct that the side effects बहुत हम overgeneralize कर लेते हैं कि for example antipsychotics will make you dumb or slow or fat or इस तरह की चीजें? Difficult to understand the question saying side effects are overgeneralized. I actually do not get that. What does that mean? क्योंकि वो क्या कहना चाह रहे हैं या क्या पूछना चाह रहे हैं इसके अंदर, और it is only just a comment. I am not sure. लेकिन yes, every medication has its own benefits and its side effects, and every medication has actually no side effects. हाँ, उस सेंस में ओवर जनरलाइज कहा जा सकता है कि दवाइयों को कहा जाता है कि जी इन दवाइयों से ये फॉर एग्जांपल ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता.
डॉक्टर साहब मैंने ये भी सुना है कि लोग कोई साइड इफेक्ट बोलते भी नहीं है, बट दे जस्ट से साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। जी Perhaps जी जी। Adil is saying that लोग ये मैंने बहुत सुना है एक्चुअली, नाउ दैट आई Yeah, थिंक that's अबाउट इट। right. लोग कहते हैं Absolutely. ये ना लो, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। इट्स अ जी जी अम्ब्रेला जी। टर्म, इट्स अ कैच ऑल के इट्स नो गुड, you know, people say Yeah, this I've perhaps, and perhaps Adil can further elaborate. Adil has also right. said that addicts do not even get detoxification mostly. Suboxone Subutex treatment requires us to make a controlled drug national prescription monitoring database. I think this is a very interesting comment, which is that there is no national database when it Yeah, comes to prescription. So true. prescriptions can be abused a lot, and when it comes to especially to the controlled drugs, like for the addiction treatment, I think Dr. Saab, it's fairly evident that what help we need. Thank you so much, Dr. Saab. Is there anything that you would like to say in conclusion before we end? Thank you for having me with you. I would only say that we are all human beings. We all have weaknesses, we all have strengths. We need to appreciate each other's strengths and we all need to make up our deficiencies. This is from me. And try to you all, and we all need to have healthy lifestyle. Like, please give everybody of us some time for our own self, like exercise, our layer time, along with whatever we are doing in our professions, family time, emotional time. All we need to divide that healthy lifestyle in our own self. This is from me. Thank you very much for having me. Thank you, Dr. Saab, so much for your precious time. And to any of the viewers, if you're interested in meeting Dr. Mohammad Azim Rao, he practices at Islamabad Specialist Clinic and he practices at Ali Medical Center. Thank you, Doctor, for your precious time. Inshallah, फिर से मिलेंगे. Khuda Hafiz. Glad to be with you. Thank you.